Pelvic inflammatory disease. So what do we understand by this term? Either it is inflammation or you can say infection, ठीक है, of the upper genital tract of female. We are concerned about the upper genital tract, nor the parts which are in the lower genital tract. तो इसमें cervix से related कुछ भी नहीं है, vagina से related कुछ भी नहीं है. These are the parts which will be involved: fallopian tube, ovary, uterus, and peritoneum. So inflammation of the fallopian tube is known as salpingitis. Ovary, uvaritis, uterus, endometritis, and peritoneum for peritonitis term is given. ठीक है. Now in our body, the natural barriers are there which protect us against these diseases. सबसे पहले आएगा intact hymen. So as a result, infections are less in virgins. Mostly tubercular are present in this particular age, but as you see in multiparous women, there are more chances of infection there. ठीक है. Hymen, then vagina itself because of the acidic secretions. Then if you see the cervical canal, it is very narrow, and here there is alkaline mucus. So in the beginning, we have acidic secretion, and thereafter we have alkaline mucus. Uterus itself. Now, how do the uterus protect itself naturally? The endometrial ciliary lining is directed downward, and this discourages the upward spread of non-motile organisms. Is it clear? So these were the natural barriers. How the hymen, vagina, cervix, and uterus was protecting the reproductive organ. Now, this is destroyed in these cases, like in abortion, delivery, menstruation, IUCD, or manual removal of placenta. What will happen? The endometrium epithelium is going to shed, right? During menstruation, vaginal pH increases. It is no more acidic now. So as a result, this barrier decreases, and chances of infection are going to increase. So what will be the causes of infection? It can be home deliveries in India. There can be criminal abortions, even minor operative procedures like dilatation and curettage, IUCD, etc. Then tubercular infection, which is blood-borne. Pelvic peritonitis can be there due to appendicitis or diverticulitis. So what will be the causative agents which will be responsible for this infection? Your normally sexually transmitted disease infections are your causative agents are your chlamydia, gonococcal, trichomonas, mycoplasma. And the most common reason कि pelvic inflammatory disease हो रहा है, that is due to polymicrobial infection. Second most common is chlamydia and then gonorrhea. ठीक है, सबसे पहले polymicrobial infection ही रहेगा, उसके बाद chlamydia, फिर gonorrhea, and these are the others like mycoplasma, trichomonas, gonococcal. ठीक है, अब STDs वाले ये वाले हो गए. दूसरे भी हो सकते हैं pyogenic like aerobes and anaerobes can be there. Under aerobes we have the staph, strepto, E. coli, और anaerobes में क्या होंगे? Bacteroides, flagellus, Clostridium, Actinomyces, and even tubercular salpingitis is there. So Mycobacterium tuberculosis is also here. Next we are going to see the etiopathogenesis. This is basically divided into two. आपका एक acute phase हो जाएगा और एक chronic phase हो जाएगा. तो सबसे पहले हम acute को discuss करते हैं. So etiopathogenesis of acute PID, that is pelvic inflammatory disease. Before that, if you see, this is the fallopian tube. We have the isthmus, ampulla, infundibulum, and then we have the fimbriae here. Okay, this is the ovary. Now just go through it like a story we are discussing. ठीक है? तो acute salpingitis, we are discussing the acute case. This is your fallopian tube. ठीक है? अब there will be some changes which are going to occur from outside. There will be some changes which are going to occur from inside. Outside अगर हम देखें fallopian tube को, fallopian tube will become swollen, edematous, hyperemic, and there will be visible dilated vessels. ठीक है? तो कैसे हो जाएगी? Swelling आ जाएगी, edema से filled. Hyperemia की वजह से even the blood vessels they are going to be dilated और वो visible होंगी. तो visible क्यों होगी? कहाँ से हमें कैसे दिखेगी? वो लेप्रोटोमी जब हम कर रहे होंगे उस टाइम दिखेगी. ठीक है? एंड व्हाट इज द श्योर साइन? अपनी आंखों से हम उस टाइम देखेंगे. दैट मीन्स दिस इज द श्योर साइन. देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ सीरोप्यूरिलेंट फ्लूइड फ्रॉम द फिम्ब्रियल एंड. सो दिस इज योर फिम्ब्रियल एंड. यहाँ से डिस्चार्ज दिखेगा. ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ श्योर साइन बट अंडर लेप्रोटोमी. ठीक है? तो ये तो बाहर से हमें दिखा. व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? द म्यूकस मेम्ब्रेन इज देयर इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब. उसमें भी हो गया है एडिमा एंड दिस इज इनफिल्ट्रेटेड विद ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स. ठीक है? उसका भी क्या हो गया? एडिमा हो चुका है और बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आ गए हैं. अल्टीमेटली दिस इज फॉलोड बाय अल्सरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. अल्सर्स बन जाएंगे. ठीक है? नाउ इन द अर्लियर स्टेजेस द फिम्ब्रियल एंड इज नॉट क्लोज्ड बाय एडिशंस. जब अल्सर्स बन गए हैं तो एडिशन फॉर्मेशन होने लग जाता है. ठीक है? लेकिन अर्ली स्टेजेस में आपका जो फिम्ब्रियल एंड था, लास्ट वाला एंड, वो क्लोज नहीं हुआ है अभी भी एडिशंस का. सो पस अगर वहाँ पे बन रही है, इट इज गोइंग टू पोर आउट है ना, एंड दैट इनटू द पेल्विक कैविटी. एज अ रिजल्ट पेल्विक एब्सेस इज फॉर्म्ड. ठीक है? एंड इफ ओवरीज आर इन्वॉल्व, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस बन जाएगा. अब ट्यूब्स के साथ साथ ओवरीज में भी एब्सेस आ गया और लेटर ऑन क्या हो जाएगा? ट्यूबो ओवेरियन मास इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड व्हिच इज गोइंग टू बी इंटैंगल्ड इन एडहेशंस. ठीक है? तो ट्यूब तक नहीं सीमित है वो, उसने ओवरीज को भी इंक्लूड कर दिया. एंड यस, ओवरीज का इन्फेक्शन को भी हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में ही काउंट कर रहे थे. ठीक है? लेटर स्टेजेस में क्या हो रहा है कि एडिशंस लीड्स टू द नैरोइंग और ट्यूबल ब्लॉकेज. यहाँ पे तो अभी फिम्ब्रा ओपन ही है. ठीक है? यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं. As a result, what can be the results of complications? Ectopic pregnancy and infertility. These two are very important complications, right? Now, अब बंद हो गया है. ठीक है? देयर इज नो ओपनिंग. आपका ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक हो गया है. अब डिस्टेंशन होगी जैसे जैसे पस फिलअप होगी, लेकिन एम्पुला में सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है? सो एम्पुलरी डिस्टेंशन. सो दिस वाज योर एम्पुला.
एम्पुला में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सो एम्पुलर डिस्टेंशन इज मोर एज कम्पेयर टू इस्थेमिक डिस्टेंशन। धीरे धीरे डिस्टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, इट देयर बिकम्स अ रिटॉर्ड शेप्ड पायोसेल्पिंग्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिटॉर्ड शेप्ड, थिक वॉल हो जाएगा, टेंस हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब विद टेंट अप फ्लूइड्स, तो ऐसे 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 हो जाएगी, ठीक है। फ्लूइड की वजह से टेंट अप और थिक टेंस हो गई होती है। एंड एक्यूट पायोसेल्पिंग्स इज सराउंडेड, अभी एक्यूट फॉर्म में ही है, इट इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय एडहेशंस व्हिच फिक्स इट टू द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ओवरी, sigmoid colon, adjacent coils of intestine and posterior surface of uterus। तो इसमें अल्सरेशन हो गई थी, ठीक है। क्या हुआ था, म्यूकस मेम्ब्रेन में एडिमेटस हो गया था, अल्सर्स बन गए थे, एडिशंस धीरे धीरे बनने लग जाती हैं, नॉट ओनली इनसाइड आउटसाइड भी, ठीक है। एडिशंस बन गई, तो एडिशंस में क्या हुआ, इट फिक्सेस टू द बैक ऑफ द जो भी आसपास है, ब्रॉड लिगामेंट है, ओवरी है, सिग्मोइड कोलोन है, बाकी कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन भी है, और यूट्रस में तो पास में ही है, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सो बट इन केसेस following post abortal and perpural infection, the infection spreads through the cervix via lymphatics, this is important in these cases, ठीक है। इन्फेक्शन कहाँ से आता है, lymphatic से, टू द सेलुलर टिश्यू इन द ब्रॉड लिगामेंट, तो सबसे पहले लिम्फेटिक्स के थ्रू कहाँ गया, ब्रॉड लिगामेंट में, कॉजिंग सेलुलाइटिस। फिर ब्रॉड लिगामेंट से आती है फेलोपियन ट्यूब के बाद, उसकी बारी, फेलोपियन ट्यूब इज अफेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एंड द म्यूकोजा इज लास्ट ऑफ ऑल। सो इन केसेस जो पोस्ट अबॉर्शल होते हैं पर्प्यूरल इन्फेक्शन वाले, फेलोपियन ट्यूब सबसे पहले बाहर से इन्फेक्ट होगी और म्यूकोजा सबसे लास्ट में इन्फेक्ट होगा, ठीक है। सो इसकी स्टेजेस होती हैं, वी हैव 5 स्टेजेस हियर, स्टेजेस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, 1 2 3 4 5। ए वाली क्या है, देखो, एक्यूट सेल्फिंजाइटिस विदाउट पेरिटोनाइटिस, अभी तक पेरिटोनियम में इन्फेक्शन नहीं गया है एंड देयर आर नो एडिशंस। स्टेज 2 क्या है, एक्यूट सेल्फिंजाइटिस विद पेरिटोनाइटिस, अब पेरिटोनाइटिस भी हो गया है एंड देयर इज प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। स्टेज 3 क्या है, एक्यूट सेल्फिंजाइटिस विद सुपर इम्पोज्ड ट्यूबल ऑक्लूजन और ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें ओवरीज तक चला गया, ठीक है। पहले पहले कुछ भी नहीं था, पहले से फेलोपियन ट्यूब तक ही था, फिर फेलोपियन ट्यूब के साथ आगे इसने पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर दिया और डिस्चार्ज करवा दिया, फिर आपके ओवरीज इन्वॉल्व हो गए। स्टेज 4 पे वो रप्चर कर जाती हैं, रप्चर्ड ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स या एब्सिस, एंड स्टेज 5 इज योर ट्यूबरक्युलर सेल्फिंजाइटिस, ठीक है। ये स्टेजेस हैं। लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट, अभी हम एक्यूट वाला ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्यूट के सिम्टम्स क्या होंगे, एक्यूट के साइंस क्या होंगे। देयर इज गोइंग टू बी पेन, बायलेटरल लोअर एब्डोमेन, and this pain is going to be accompanied by high temperature and vomiting, obviously infection है तो fever तो आएगा ही, high temperature and vomiting। there is going to be vaginal discharge, a vaginal discharge, if it is thick purulent, the reason can be gonorrhea, and if it is thin watery, the reason can be chlamydia, right? There will be symptoms of urinary system involvement can also be there, like dysuria, menstrual irregularity can be there, why, we said endometritis can be there, right? Endometritis, that is also pelvic inflammatory disease, endometrium is involved. And if there is pelvic abscess, so severe diarrhea can be there along with the above symptoms, and this diarrhea will be because of erectile irritation, right? Next are some signs. Temperature is going to be increased, then tachycardia, the tongue can be dehydrated and coated, tenderness and rigidity over lower abdomen with distension, per speculum पे discharge from cervical canal can be seen, cervical motion tenderness, very important, tenderness in the fornices, and later on tender pelvic masses are felt in the lateral fornices, ठीक है। These pelvic masses, they can be fixed or they can be prolapsed behind the uterus. So these two are very important here, cervical motion tenderness and this is adnexal tenderness, adnexal में fornices में आपको tenderness मिल रही है। So what can be the differential diagnosis, acute के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस एंड एक्टोपिक गेस्टेशन, रप्चर्ड एंडोमेट्रियल सिस्ट, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट एंड सेप्टिक अबॉर्शन। सो व्हाट आर द डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस वी विल बी डूइंग इन दिस पेशेंट। सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, बिकॉज आपका सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस वो किसमें पॉजिटिव होता था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी, सो टू रूल आउट सच फैक्टर्स। बाकी आप ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, हीमोग्लोबिन ईएसआर विल बी रेज्ड, सी रिएक्टिव प्रोटीन विल बी रेज्ड एंड टीएलसी आप करेंगे, ठीक है। ब्लड में यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल्स आप देख सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन ब्लड कल्चर इफ बैक्टीरिया इज देयर, यूरिन टेस्ट फॉर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन विद पीसीआर, ठीक है। तो यूरिन में आप क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन को चेक कर सकते हैं यूरिन का पीसीआर करके, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल एंड हाई विजाइनल स्वैब फॉर एरोब्स एंड नॉन एरोब्स, तो सर्विक्स है और विजाइना का बहुत हाई, ठीक है। सबसे पहले विजाइना होता है फिर सर्विक्स आता है, ठीक है। सो हाई विजाइनल स्वैब एंड सर्वाइकल स्वैब लेना है आपने। यू इवन हैव टू टेक यूरेथ्रल स्वैब, ठीक है, इफ गोनोरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड। पीसीआर कर सकते हैं, अभी वही वाला हो गया, यूरिन वाला डिस्कस किया हमने। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंडोसर्विक्स कंटेन्स क्लेमाइडिया एंड कल्चर फ्रॉम द एंडोसर्विक्स इज नेसेसरी, ठीक है। This is the same cervical swab, but you can write it endocervix specifically. Culdocentesis to rule out again ectopic pregnancy. Then other serological microfluorescence tests like IgG, IgM antibodies, laparoscopic, ultrasound, CT, MRI, and HIV and other STDs should be investigated. So how do we diagnose the PID? अगर separately पूछा जाए diagnosis के ऊपर, तो CDC criteria for the diagnosis of pelvic inflammatory disease includes minimum criteria, additional criteria, and specific criteria.
राइट। मिनिमम में अब जो हमने अभी साइंस एंड सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस की उनको ही क्लब कर दिया गया है। सो मिनिमली देयर शुड बी लोअर एब्डोमिनल पेन विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री। क्या तीन है? सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है, यूट्राइन टेंडरनेस है, एडिनेक्सल टेंडरनेस है। ठीक है, सर्वाइकल, यूट्राइन एंड एडिनेक्सल टेंडरनेस। एडिशनल क्राइटेरिया में क्या आता है? फीवर, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज और माइक्रोस्कोपिक डिस्चार्ज, रेज्ड ESR and C-reactive protein, lab tests are positive for gonorrhea and chlamydia, and specific criteria include endometrial biopsy, TVS or MRI or laparoscopy. So these are the criteria: minimum, additional, and specific. So how do I going to treat this patient of acute pelvic inflammatory disease? It is divided into mild, moderate, and severe. If it is mild, then home management with antibiotics can be done. But in moderate to severe cases, hospitalization has to be done, right? So what are the treatment modalities here? We have medical treatment with the help of antimicrobials, minimal invasive surgery, and major surgery. So here we follow a syndromic management. What is syndromic management? It is simple, client friendly, cost effective, applicable in the community at primary care level, right? Management is based on clinical presentation and treatment can be given without laboratory tests. Because we do not want to waste time waiting for the investigation results to come, so we start the management earlier on the basis of the clinical presentation. इसीलिए इसको क्या कहा है? Syndromic management. ठीक है? Now under hospital management these things are there: rest, IV fluids, dehydration, vomiting, correction of electrolyte imbalance. Riles tube aspiration can be done in cases of peritonitis with distension. Analgesics, then antibiotics at the earliest and not wait for the culture results. In most cases, both aerobes and anaerobes are present, so essential to administer more than one antibiotic to cure the disease and prevent permanent damage to the fallopian tube. So initially we can go with the IV route and then switch to oral. When culture report is available or either the patient fails to respond to the antibiotics, we can make appropriate changes in the antibiotic therapy. So these are the antibiotics. We have, how you can remember, C, D, E, F is not there, then G and D. Clindamycin, doxycycline, erythromycin, gentamicin, and tetracycline. So for this syndromic management, kits are there if you know. Yellow kit, kit number 6 is there. It contains 3 drugs: doxycycline, metronidazole, and cefixime. So this is the dose: 100 milligram, फिर 400, फिर 400, then above 2 are twice a day, OD. Above 2 are again 14 days, and then 1 day. So these 2 are same here, 400, और फिर ये वाला same हो जाएगा. Then we should know that pelvic inflammatory disease is sexually transmitted disease except genital TB. So partner should be investigated and treatment. So for partner, for males, grey kit or kit number 1 is given, which includes tablet azithromycin 1 gram or tablet cefixime 400 gram. Right? Either these antibiotics are used in hospital settings or a combination of them are used. And under RCOG green top line guidelines, single dose of intramuscular cef can be given, followed by oral doxycycline or metronidazole for 14 days as outpatient treatment, or ceftriaxone IM followed by azithromycin 1 gram per week for 2 weeks can be used. Then next is your minimal invasive surgery. ठीक है, ये कब करते हैं? इन केसेस जहाँ पे साइज ऑफ द एब्सेस इज मोर देन 10 सेंटीमीटर और द एब्सेस फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स इन 40 to 72 hours, एब्सेस रप्चर, पायोपेरिटोनियम. सो कौन कौन सी सर्जरीज आती है इसमें? लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज कैन बी देयर और पोस्टीरियर कॉल्पोटोमी, अल्ट्रासाउंडेड guided vaginal aspiration of pelvic abscess or percutaneous abscess drainage under CT or ultrasound guidance. और थर्ड नंबर पे हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट आता था जिसमें ड्रेनेज ऑफ pelvic abscess by colpotomy, dilatation and evacuation of septic products of conception or for hemorrhage in past abortal sepsis. These are the conditions under which the surgical treatment is there. ठीक है, acute spreading peritonitis and resistant to full course of chemotherapy, intestinal obstruction, suspected intestinal injury, ruptured abscess, tubo-ovarian abscess. So in this we can remove as it depends upon the age and severity. We हम इस तरीके से surgical treatment कर सकते हैं. Next, we are starting with the chronic pelvic inflammatory disease, starting with the etiopathogenesis. Now, this is the end result of acute infection or failure of the acute pelvic infection to resolve. As a result, chronic tubo-ovarian mass is formed. अब ये manifest करता है in the form of these 5: hydrosalpinx, chronic myosalpinx, chronic interstitial salpingitis, tubo-ovarian cyst, tuberculous form. Right? Let's discuss one by one few points about these. The first one is hydrosalpinx. This is the end result of previous salpingitis. तो जब हमारे पास पायोसल्पिंक्स बना था, हमने एंटीबायोटिक्स दी. So within 6 weeks जो पस थी fallopian tubes के अंदर वो sterile हो गई, but damage to the tube remains as it is. ठीक है, as hydrosalpinx and chronic myosalpinx. So there is going to be a retort shaped due to enormous dilatation of the ampullary region, filled with clear fluid and may be as large as 15 centimeter. The fimbrial end is closed. अभी वहाँ पे हमने acute में भी पढ़ा था, initially fimbrial end is open, लीकेज होती है पस की, लास्ट स्टेजेस में वो क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे chronic phase में आके वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है. Fimbriae are indrawn so that the outer surface of the hydrosalpinx is smooth and rounded. No fimbriae are there everywhere, so it's very smooth. Another one next was chronic myosalpinx, a thick wall surrounded by dense adhesions filled with pus, and inner wall is replaced by granulation tissue. Right? Then chronic interstitial salpingitis. In this, everything is same outside, but there is no accumulation of pus in the lumen. Tubo-ovarian cyst, when the hydrosalpinx communicates with the follicular cyst of the ovary. So this leads to formation of tubo-ovarian cyst. So here what will be the signs and the symptoms? In patients को भी pain रहेगी and this pain will be constant lower abdomen pain. It worsens before menstruation. There is low back ache always, constant. ठीक है? Dyspareunia, menorrhagia,
polymenorrhagia, congestive dysmenorrhea, vaginal discharge, which can suggest of chronic cervicitis. Infertility will be there, yes, blockage of the fallopian tubes, and rectal irritation. So on pelvic examination, the uterus and pelvis, they will be densely adherent. This is known as frozen pelvis. What are the differential diagnoses here in this cases of chronic? It can be uterine fibroid, pelvic endometriosis, ovarian tumor, ectopic gestation, and tubercular tubo-ovarian mass. The investigations remains the same, okay? For the treatment purpose here, surgery is the only modality. If if the patient is young, तो हम conservative treatment कर सकते हैं, like salpingectomy, salpingo-oophorectomy, right? In older or some multiparous, जहाँ पे extensive damage है, abdominal hysterectomy can be done with bilateral salpingo-oophorectomy. ठीक है? Then tuboplasty required if tubal lumen is blocked. Laparoscopic breaking of external adhesions has to be done. If IVF considered, removal of hydrosalpinx or bilateral tubal ligation should be undertaken prior to IVF. Be antitubercular treatment.